देखिए मिड डे प्राइम। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नवाचारों की दुनिया में एक और नवाचार। आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका ने बनाया एक क्रिएटिव हेलमेट जो बचाएगा सड़क दुर्घटनाओं से। तो दिखाएंगे आपको 81 वर्षीय मैराथन के महारथी का जज्बा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात निवेश संबंधी घोटालों की और बताएंगे आपको विस्तार से क्या है क्रिप्टो करेंसी। 99.99% क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो पैसा डूबने के लिए बनाई गई। अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट 40 लाख बढ़ाया, कह रहे 40 लाख आपको और डालना पड़ेगा। तब मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने ये गलत कर लिया और ये फ्रॉड है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम शामिल हो जाता है। वो खुद एक स्टेज मॉनिटर है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अक्यूज की तरफ से ये पूरा चलाते और पैसा निकाल देते हैं। देखिए साइबर अलर्ट इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे गुर्दे में पथरी की समस्या के बारे में और आपको बताएंगे क्या है इसके कारण और इलाज के आधुनिक विकल्प। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए शनिवार 1 मार्च सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे। नमस्कार है आपको, सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। Well, the President of the European Commission, Her Excellency Ursula von der Leyen, accompanied by the College of Commissioners, are on official visit to India, as you all know. The 22 of the commissioners are part of the EC delegation, and this is really an unprecedented and a landmark visit on many counts. This is one of the first such visits by the college in its new mandate, and the first which has been outside Europe, and their new mandate, of course, began in December 2024. This visit signals the high priority that is attached by both sides to the strategic partnership that we share. And the visit of the entire college also highlights the very extensive breadth of our partnership and engagement. President von der Leyen met Prime Minister Modi
And the two leaders held extensive discussions, including in the delegation level talks. In addition to these talks, there have been 20 individual ministerial meetings since yesterday, again something very unprecedented, where the College of Commissioners have met their counterpart ministers. These other meetings have included meetings of the bilateral cluster, the three meetings of the ministerial level for the three working groups of the Trade and Technology Council and the Trade and Technology Council Ministerial itself. 20 cabinet ministers and ministers of state from India also participated in the delegation level talks today. The themes covered in these bilateral ministerial engagements, in addition to the trade and FTA and digital green technologies to supply chains under the TTC, some of the other themes that were discussed were ranging from finance to renewable energy to environment, research and innovation to skilling and education, space to defense, connectivity and mobility, sustainable urbanization to water to fisheries, women empowerment to youth. So this really gives an idea of how extensive and broad-ranging the discussions were held at ministerial level, and this explains the breadth of our strategic partnership that we share. I would like to share some of the program elements briefly. Yesterday, upon arrival, President von der Leyen was received at the airport by Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Srimati Anupriya Patel, and was accorded a ceremonial reception and a cultural welcome. Thereafter, she visited Rajghat to pay tributes to Mahatma Gandhi. External Affairs Minister had called on the President von der Leyen last evening. Today, the plenary meetings were followed by a banquet lunch hosted by the Prime Minister in honor of President von der Leyen and the College of Commissioners. And later this evening, the Confederation of Indian Industry, CII, will host a business event with leaders of industry, and they will also host a dinner for the delegation. Earlier today, the President von der Leyen, she experienced the digital payment transaction, UPI, at one of the venues. And the College of Commissioners also traveled by the hydrogen bus to the venue. These two areas, of course, digital transformation and green energy transition, are areas where India is developing our capabilities very quickly. And also these are areas, some of the key areas where India and EU are collaborating very closely. Among the outcomes, there has been a leader's statement, which will be, I understand, will be issued shortly. It highlights the important context of the visit and the significance, and also the guidance that has been provided by the leaders to their teams to take the strategic partnership forward in very, very substantial ways. Some of the key outcomes relate to trade, investment, technology, mobility, connectivity, defense, and these broad themes. In a major outcome, the leaders have directed their teams that the India-EU FTA should be concluded within the year. This is, of course, a very important outcome, as negotiations have been ongoing on this aspect. There has also been very clear progress on the different working groups under the Trade and Technology Council. These working groups, just to refresh your memory, the themes are from strategic technologies, digital governance and digital connectivity, that is working group 1. Then green and clean energy technologies, and that is the working group 2. And trade, investment and resilient value chains is the theme of the working group 3. And there has been very extensive discussions and progress in all three of these tracks. On technology further, there has been progress in the implementation of the MOU on semiconductors, from boosting supply chains to facilitating talent exchange and skilling. And also there has been MOU between the Bharat 6G Alliance and EU 6G Smart Networks and Service Industry Associations, and extensive discussions were held on taking these cooperation forward.
There is also a deepening collaboration between the India AI Mission and the European AI Office. On clean and green energy, there is joint funding been announced of 60 million euros for research projects ranging from electric vehicles to plastics, marine plastics, and also to projects on waste to energy, especially to green hydrogen. There has been progress on the third phase of the work plan on clean energy and climate partnership that India and EU share. And India-EU Green Hydrogen Forum will be held. And India-EU Business Summit on offshore wind energy is also planned. Another area of collaboration, important collaboration, has been connectivity. And in that sphere, both sides discussed the significance of the IMEC connectivity initiative and various ways to take this forward. On the defense and security domain, especially maritime security, the EU has decided to join India's Indo-Pacific Ocean Initiative, IPOI, and EU is also joining as an observer or a dialogue partner in the IORA initiative. There was also discussions and cooperation on improving maritime domain awareness, especially the cooperation between fusion centers in terms of sharing information. Similar cooperation was discussed between the Indian Navy and the Operation Aspides of European Union. There was also discussion on how India could join projects under the EU's Permanent Structured Cooperation, which is called the PESCO, EU's Security and Defense Program. It was also decided to hold focused discussions on defense industrial partnerships going forward. And India-EU Space Dialogue will be launched soon. And both sides also decided to pursue trilateral cooperation projects both in Africa and also in the Indo-Pacific region. This area has been another important area of collaboration, since both India and EU have extensive development partnership program across various geographies, and both sides have now decided to pursue such cooperation projects. The leaders' statement and the Trade and Technology Council joint statement will be shared with you. I would like to add some more on the recent interactions that have been held between the two sides and some of the background information relating to the extent of our partnership. Among the recent interactions, of course, last Friday, External Affairs Minister had met the EU High Representative for Foreign Affairs, HRVP, Ms. Kaja Kallas, in Johannesburg on the sidelines of the G20 Foreign Ministers meeting. Last month, Commerce and Industry Minister had traveled to Brussels to hold detailed talks on talks with the EU Trade Commissioner, Maros Sefcovic, who was also part of the college visiting currently. Prime Minister Modi and President von der Leyen have met 7 times earlier, both in terms of bilateral settings, but also multilateral settings, for example, G7 and G20 meetings. This was the third visit of President von der Leyen to India as the EC President. Her previous visits were in September 2023 during the G20 summit, and earlier in April 2022 in a standalone bilateral visit. In recent months, for example, if we just look at last 18 months, there have been more than 110 interactions at the head of state, head of government, and ministerial level between India and Europe. This is a very, very substantial number, of course, and it shows the extent of the intensifying and diversifying engagement between India and countries and regions of Europe and member states of the EU. Between India and EU, there are 30 bilateral institutional dialogue mechanisms which meet regularly at the senior official level. Our strategic partnership is completing 20 years. It was started in 2004, and now the
two sides, the two leaders have decided to accelerate and elevate this partnership further. The trade, technology, talent, innovation, investment, green transition, defense production, security, and resilient supply chains are some of the key areas of our strategic partnership. India's largest trading partner in goods is the European Union. The trade in goods has nearly doubled over the last decade to reach a figure of US $135 billion, and the figure has grown 3 times over the past 2 decades. Trade in services stands at around $53 billion. EU is a major investment partner for India. EU's collective FDI into India is nearly $120 billion since the year 2000. And India's investment into the EU is also growing, and it is now estimated at around US $40 billion. If we look at the business cooperation, there are an estimated 6,000 companies from EU countries which have active business presence in India. And similarly, around 1,200 Indian companies are estimated to have business presence in EU countries. So this is a very, very substantial trade, investment, and business partnership that we share. Another very important element is the people-to-people contact. The Indian diaspora in the European Union continues to grow. It is estimated at around 1.65 million currently. And this includes 120,000 Indian students as estimated. So these are some of the numbers that give you the extent of the close strategic partnership that we share. And as I mentioned, in the outcomes today, the areas were really trade in terms of the announcement on the timelines for FTA, the concrete progress achieved in the Trade and Technology Council among various technology tracks ranging from artificial intelligence to semiconductors to quantum computing, high-performance quantum computing, the connectivity relating to IMEC initiative, the EU's joining of IPOI, Indo-Pacific Ocean Initiative, the push on green hydrogen, and the furthering of cooperation in the sphere of space cluster. So these are some of the areas that have that are really taking this strategic partnership forward. And as I mentioned, this has been really historic and unprecedented in terms of the range of interactions that were held at the same time at the leaders level and also at the ministerial level, with 22 commissioners from the EU traveling to India and 20 ministers taking part in the delegation level talks, and also 20 bilateral meetings over the last 1.5 days. So this will be completing my initial briefing. We are now open for questions. Okay, so Ayushi first. We'll take three questions. So this is Ayushi from ANI. I just wanted to know how much was Russia-Ukraine discussed between the two leaders, and also was there any discussion on the enforcement of sanctions, enforcement of EU sanctions on Russia? Sudhi. Sir, thank you. Sudhiranjan from Bloomberg. Two questions, sir. One, in the free trade agreement, when setting the date, did the two leaders or the two sides have any discussion on spirits, motor vehicles export? Because that is one of the issues that has been stalling this entire issue. And if so, has there been any commitment from either side to look into it? And on the IMEC, sir, was Israel-Gaza war discussed, and any chance of re-looking at the routing of IMEC? Shubham. Hi, sir. Shivam from Reuters. Was the carbon border mechanism discussed at all in terms of the EU, and could there be any possibility of any flexibility for India in that? That's, yeah.
Elena, you had a question? Yes, good afternoon. Elena, TASS News Agency. I wonder in what form European side raised the issue of sanctions, and as we saw in the media, there were a lot of publications with the reference to European sources that during this visit the delegation from EU will raise this issue, sanctions against Russia. So in what form does the European side raise this issue, and how do you react to their form of... So do you feel some kind of pressure from their side on this particular issue? Okay. Thank you. Thank you. Sir. We'll come back for more questions. You can take these questions. Okay, so CBAM. Well, CBAM, of course, is a concern for a large number of countries, especially in the global south. We have highlighted our concerns to our EU partners on a number of occasions. We have also noted that the EU has made some modifications to a CBAM framework to simplify some of the aspects. And we are examining the implications of that. And we hope that the concerns of the developing country partners will be taken into account and addressed suitably in any such scheme. On the FTA, of course, the two sides discussed there was a ministerial separate meeting, and also the main talks. The emphasis was on how to get the FTA done quickly, and there was a clear political commitment and agreement to do it quickly. And that is also reflected in the directions that were given by the leaders to the two sides. On IMEC, yes, IMEC, both sides interest, strong interest in pursuing the project, which will bring together the India and Europe in a major connectivity route. And the discussion was how to take this forward, despite the problems that may be being faced at the moment. There is also progress going on in different aspects of IMEC at the same time. In any meeting of global leaders, the issues of international global interests of mutual concern and mutual interest are discussed. And relating to the issue, your question about sanctions, no, that was not discussed. Okay. Siddhant? Hi, so Siddhant from Beyond. How much was the issue of cross-border terrorism, that basically means terrorism from Pakistan, being discussed? Because earlier today, at an address in Delhi, she mentioned about that. And second question, how much the focus or emphasis was on China during the talks? Rishikesh? Sir, Rishikesh from PTI. So was there any discussion held on threat posed by Chinese equipment? And is there any consensus on how India and EU can reduce the dependency on Chinese products, especially as President has mentioned that we should promote the dependable supply chain? Ram Prakash? सर ब्रह्म प्रकाश दुबे न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल है कि वीज़ा को लेकर जो डिस्कशन हुआ है भारत और ईयू के बीच, वो किस तरह का डिस्कशन हुआ है, किस तरह का बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी जाती है अभी खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में वीज़ा लेने के लिए। थैंक यू। केशव? Thank you, sir. Keshav Padmanabhan from the print. Two questions. One, when you say that regional and global issues were discussed, were there any pointed discussions on the situation in our neighborhood with regards to Bangladesh? Was any of this raised at the political level with the European Union? And secondly, when we talk about the free trade agreement, we've heard a lot about the EU's concerns, wine, spirits, automobiles. Can you give us a sense of what are India's concerns when it comes to tariffs, especially the EU's protectionism with regards to its own agricultural market?
So can you sort of give us a sense of what India's issues with EU's FTA, with this FTA is? Thank you. Rishabh. Hello. Good evening, Secretary. Rishabh from Time Now. So just a related question. A senior EU official has mentioned that without agreement on cars, wines and spirits, an FTA is very unlikely. So they are pushing for tariff cut on import of car, wines and spirit. So are we ready to accommodate it, and where is the negotiation right now? Because this has been a constant message coming in from Brussels that India needs to cut tariff on these issues. A and B, so, as Siddharth asked, on cross-border terrorism, there have been a lot of discussion between India and EU on terrorism. Was there any concrete thing, given that we are also talking about a roadmap from 2025? Sir. Thank you. I think several questions on FTA. See, if I mentioned recently, last month, Commerce and Industry Minister had traveled to Brussels, where he held talks with his counterpart, Trade Commissioner, Sefcovic. Trade Commissioner is here, part of the EU delegation. The next round of the talks are also due soon. There is extensive and very intense negotiation going on, and the political direction is clear. Now, I would not like to go into the details on individual products. That is for the negotiators to resolve. But both sides have agreed that this is an important FTA. It has to be done quickly, and it has to be done in a balanced and a mutually beneficial and equitable manner. The question on visas. There are regular discussions on visa and consular issues between India and EU. This was also discussed during this visit. Last year, the EU had announced a Schengen cascade visa scheme that is aimed at facilitating longer-term visas for frequent travelers from India. And separately, India and EU member states have also been discussing what are known as the mobility and migration agreements, to facilitate the growing legal pathways for our professionals, skilled workers who are increasingly in demand in EU countries, and also students. So many of these things are already being done. India and EU also has a separate mechanism, I mean not only the individual countries, but India and EU, which is called the CAMM, and there again many of these issues are taken up. There is a clear agreement that this is a mutually beneficial area, and we must try and explore ways where trained talent can, find a facilitated pathway from India to Europe because of the requirements, and how the European technology and Indian talent can match each other. So there have been very positive discussions on this sector. And you may know that mobility partnership agreements have India and some of the countries in the EU have already signed up. We have done agreements with Germany, France, Italy, Portugal, Austria, and Denmark, who are among the EU members. So this is a very active area of discussion and cooperation going forward. India is also the largest recipient of their Blue Card scheme and the scholarships, for example, under the Erasmus framework. So we are very much looking forward to further facilitation of this area, which is in mutual interest. The supply chains and the resilient supply chains has been a very important area of discussion between India and the European Union. And as I mentioned, the Working Group 3 from the Trade and Technology Council actually focuses on these aspects. So yes, the resilience, how to make the supply chains resilient, what will it imply for various technology sectors, manufacturing sectors in different areas, engineering, defense, so many other aspects was discussed and is being taken forward very, very
strongly by both sides. Yes, terrorism was discussed. It is an important area when we discuss the security issues, and they form an important aspect of our discussions. Both sides are very conscious of the need for deepening cooperation in controlling and combating terrorism, including its financing, and they collaborate at various platforms, individually and in a multilateral context, to take this cooperation forward. I think I have covered the questions. Yeah. We'll take some more questions. So John there. Thank you. John Reed from the FT. Ms. von der Leyen spoke about setting a deadline by both sides of concluding the FTA by the end of this year. Can you confirm that that's indeed India's goal as well? And if so, is that a realistic goal, given all the issues that divide the two sides? Thank you. Raghavendra. Raghavendra Verma from ZDF German Television. My question is also regarding FTA. So has something changed in the last few years, or that brings the confidence between the two sides that it will be easier to conclude? Recently there have been these tariff disruptions from the United States. Does it make it easier or difficult for the two countries, two partners, to conclude this FTA? And so there are specific, you have not gone into the specifics of the products, but these products are aligned to many of the member countries in the EU. Is India also discussing such issues with the individual countries in the EU to make this faster and happen? And lastly, sir, India-UK FTA is said to be much easier to sign than the India-EU, and that has also not happened for so long, sir. Is there any progress on that? Is it will be happening soon also? We have a question right behind. Yeah. Alexander Vesuk, Российская газета Russia. I was wondering, has the Ukrainian conflict come up during the negotiations, specifically in the context of US-Russian negotiations that had taken place recently? And secondly, if I may, since US President Donald Trump has threatened both India and EU with new tariffs, has the issue of US approach towards global trade been discussed? Thank you. Last question there, Abir. Sir, this is Ubir from the Tribune. Sir, my question is, you said that this delegation from Europe traveled in this hydrogen bus. Can you please elaborate what was the idea behind it? Okay, so regarding the hydrogen bus, of course, Thank you. Of course, the idea behind hydrogen bus was to show the extent of work that is ongoing in terms of renewable energy and green technologies, green transition is very much part of India's priorities. We have set very ambitious renewable energy targets, and green hydrogen will form a very important sector in our pathway towards those targets. And that is also one of the areas where Europe and India, EU and India, have a lot of expertise, technology, collaboration to share, which is ongoing. And this shows both the growing capabilities in terms of technology, its use for, in this case, public mobility in India, and the interest, this being an area of interest for both the sides. So that was the idea behind the bus ride. On the FTA, of course, the negotiations have been ongoing with when you have two large economies, two very diverse economies, and on one side
EU, which comprises of 27 member states. The negotiations will take time, but there has been a clear determination and clear decision by the leaders today that the FTA has to be finalized within the year. So there is no doubt upon that. This is also reflected in the leader's statement. And as you mentioned, it was also mentioned during the press remarks done by the leaders. So there is a clear direction available now, which is always helpful when the negotiators meet. It helps resolve many difficult questions sometimes, and we are very confident that this will be done. In terms of your question regarding various products, etc., that is a given. I mean, there are different concerns for both sides, always are in any negotiation, especially in trade negotiations. But as I said, now the decisive, clear mandate has been given by the leaders to their teams. On other global issues, as I mentioned, the global issues of mutual interest are always part of the discussions. But if you really see, this visit has been about the strategic partnership between India and EU and how to both elevate it and accelerate it going forward by the two sides. Just if you see the extent of the bilateral meetings that took place, 20 ministerial bilateral meetings, 20 ministers and 22 commissioners being there during the talks. So the focus was clearly and very firmly on what India and EU are doing together and what we can do together and how we can further deepen this partnership going forward. So that was the focus of this visit. Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you very much for your participation. Good girl. आके सैलरी नहीं झुमके ना पहले बचत पहले झुमके सुनो हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. तो बिहार में अब ऐसा लग रहा है खेला शुरू हो गया है। बिहार चुनाव को लेकर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं, सारी पार्टियां अब लग गई हैं कि अखाड़े में कूदना है। और बिहार का चुनाव तो आपको पता है ना, एक कहावत है कि बिहार में बच्चा बच्चा राजनीति के बारे में जानता है और वहां पर जब भी कभी चर्चा होती है तो वो राजनीति से शुरू होती है, राजनीति पर खत्म होती है। तो इसी तरह से एनडीए ने तो भाई साफ कर दिया है आज कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा नहीं होगा ये सब बातें भी हो रही हैं। लेकिन दूसरा जो गठबंधन है उसमें अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने टॉप 45 सीक्रेट टॉप 45 ये लिस्ट बना दी है। तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर बात कर रहे हैं। तो इधर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उधर क्या है, किसका चेहरा, किसका नेतृत्व, कितनी सीटें। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुरु प्रकाश पासवान मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सैयद जवाद मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। स्टूडियो में हमारे साथ संजय राणा मौजूद हैं। लेकिन मैं जरा शुरुआत एक बारी सैयद जवाद आप ही से करती हूँ। सैयद जवाद का शायद फ्रीज हो गया है फ्रेम। गुरु प्रकाश पासवान जी, ये बात अब आज एनडीए की तरफ से साफ कर दी गई, खासकर बीजेपी की तरफ से, कि नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा, नीतीश कुमार का ही चेहरा होगा। तो ये पूरी तरह क्लियर है।
नहीं, बिल्कुल। देखिए रीमा जी, ऐसा है कि लगातार एक खेमे के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये भ्रम और भ्रांति को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अदर साइड में कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। आप लगातार देखिए 2005 से, वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, पिछले 20 वर्षों में विधानसभा और लोकसभा दोनों वो भारी मात्रा में जनादेश और आशीर्वाद एनडीए को प्राप्त हो रहा है। अभी 4 सीटों में बाईपोल के चुनाव हुए थे रीमा जी, उन चारों की चारों सीटों में एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से जीत के आए थे। वहीं दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, नीतीश कुमार जी को लेकर के जो इतनी एंग्जाइटी है, नीतीश कुमार जी को जो लेकर के इतनी हताशा है, उसको समझने की आवश्यकता है। लगातार इंडी गठबंधन के जो सूत्रधार थे, इंडी गठबंधन जिन्होंने बनाया था, वो खुद इंडी गठबंधन को छोड़ करके हमारे साथ आ गए थे। इसीलिए कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। पुनः जंगल राज के पोषकों के पास बिहार नहीं जाने वाला है। बिहार की 14 करोड़ जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी पे है, भारतीय जनता पार्टी पे है, जनता दल यूनाइटेड पे है। लालू जी और उनके परिवार की सुनवाई कोर्ट में हुई है लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो कभी लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, कभी फॉर्डर स्कैम हो, लगातार स्कैम में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी आज भ्रम और भ्रांति का सहारा ले रही है। हमें समझने की आवश्यकता है, जिस प्रकार पिछले 20 वर्षों में बिहार की जनता का आशीर्वाद जनादेश में प्राप्त हुआ है, आगामी अक्टूबर के विधानसभा चुनावों में भी हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि बीजेपी एनडीए का शासन होगा, सरकार आएगी और नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री होने वाले हैं। सही है जवाब। जंगल राज दोबारा नहीं चाहिए जनता को, किसी को भी नहीं चाहिए। दिल्ली में भी देखिए बहुत सारा एक एजेंडा चलाने की कोशिश हुई, फेल हो गया, जनता ने ठुकरा दिया। अब सुशासन बाबू और सुशासन की सरकार वही चाहिए ना, इसीलिए आप लोग डिरेल हो चुके हैं क्या पूरी तरह से? समझ नहीं आ रहा करना क्या है। रीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। देखिए ठग्स ऑफ बिहार, जितने एनडीए गठबंधन के अंदर लोग हैं, मैं उनको ठग्स ऑफ बिहार इसलिए कहता हूं कि जिस हिसाब से लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिल करके बिहार को ठगा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो वहां जाकर के घोषणा करके आते हैं, स्पेशल पैकेज देने की बात करते हैं, कितना चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कहते हैं, फिर जो है विशेष पैकेज की बात करते हैं। आप मुझको ये बताइए कि कितने बिहार के लोग पलायन करते हैं जॉब के लिए, बड़े बड़े शहरों में आते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगह पर पलायन करते हैं, और जहां से गुजरात, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र रहा हुआ है, वहां के कितने लोग बिहार में आकर के नौकरी करते हैं? पूछ लीजिए नीतीश कुमार से आकर के, कितने गुजराती आकर के बिहार के अंदर नौकरी करते हैं? बिहार के बच्चों के हाथ में छेनी हथौड़ा पकड़ाएंगे साहब। और गुजरात के व्यापारियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल मचलता है कि अरे उनको कोई तकलीफ मेरा सवाल कुछ और था ना, सही जवाब वैसे आपसे। अरे जवाब दूंगा, आऊंगा। अरे अब इतना गुरु पासवान ने बोला, इतनी देर के बाद मौका तो हम भी ले लें। रही बात एनडीए की, नीतीश बाबू पे भरोसा नीतीश बाबू की पार्टी के लोगों को नहीं है। अब भरोसा जताने लगी रीमा जी, अब भरोसा जता रही है कि नीतीश सब कुछ ठीक है। अच्छा, दिक्कत ये है सैयद जवाद, दिक्कत ये है सैयद जवाद की बात आपको नीतीश कुमार की करनी है। चलिए, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल जुड़ गए हमारे साथ। जयंत जी, ओके ओके ओके, रुकिए, अरे भाई रुकिए ना एक मिनट। अच्छा रुकिए, जयंत जिज्ञासु जी, अरे रुकिए। जयंत जिज्ञासु जी, नीतीश कुमार चेहरा होंगे, नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा, एनडीए में सब ठीक ठाक है, लाडले हैं वो, लेकिन आपका लाडला कौन है अभी तक समझ ही नहीं आ पा रहा है। राहुल गांधी लाडले हैं या तेजस्वी यादव लाडले हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए आप भी जानती हैं कि सैयद जवाद रुकिए भाई, रुकिए, हो गया आपका, अब रुकिए एक मिनट। हाँ, नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी से 24 वर्ष सीनियर हैं चुनावी राजनीति में, और बावजूद इसके अगर नीतीश कुमार जी को सूगा मैना तोता लड्डू पेड़ा की तरह, नूनू बाऊ की तरह लाडला कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और जदयू के साथी इस बात को लेकर अगर बहुत खुश हैं, ये खुशी और ये उपाधि उनको मुबारक हो।
हमारा तो इतना कहना है कि गठबंधन हमेशा सखा भाव के साथ चलता है, और चूंकि एकनाथ शिंदे का उदाहरण हम लोगों के सामने है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर आज ही दिलीप जायसवाल जी का बयान आया है ना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हम लोग तो अब तक यही सुनते आए हैं संसदीय राजनीति में कि विधायक दल का नेता तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। गठबंधन का कोई घटक दल का पार्लियामेंट्री बोर्ड कैसे तय कर सकता है इस बात को? तो ये तो एक विचित्र विरोधाभास खुल के सामने आ गया है। और इसीलिए उनके सुपुत्र ने भी कहा, निशांत जी ने, कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए 5 साल तक, और वो ठीक है। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं गुरु प्रकाश पासवान जी का, उसके बाद संजय राणा। गुरु प्रकाश, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, उनका कहना है भाई एनडीए का पार्लियामेंट्री बोर्ड कब से डिसाइड करने लगा है सीएम का चेहरा? नहीं, देखिए बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। हाँ ठीक। प्रश्न मुझसे रीमा जी? हाँ फिर से जवाब। देखिए, बिहार के 14 करोड़ लोग पिछले 20 वर्षों से तय कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तो एक संसदीय स्ट्रक्चर होता है, पार्टियों का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बिहार के 14 करोड़ लोग अभी पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में से 30 सांसद बीजेपी एनडीए के लोग जीतते हैं। 2020 में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरते हैं। 2010 में हम 200 से ज्यादा सीटें लेके आते हैं। 2005 से हम लगातार सत्ता में हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों ने अपना मन बना लिया है, तय कर लिया है, निर्धारित कर लिया है। नीतीश कुमार जी के सुशासन का मंत्र। अरे बीजेपी ने क्या मन बनाया है? नरेंद्र मोदी। बीजेपी की तो बात कर रहे हैं, वो एनडीए में ही है ना बीजेपी? एनडीए में है बीजेपी, महागठबंधन में नहीं है, एनडीए में है बीजेपी। अरे एनडीए में है। अच्छा लगा। अगर मेरी बारी मैं पूरा कर लूं, एक बार और, वंस मोर। रीमा जी, पूरा कर सकता हूं क्या? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ बोलिए। अभी लगातार 20 वर्षों से एनडीए एनडीए एनडीए, आप चाहे जितना भी राग अलापिए, नीतीश कुमार जी का सुशासन और मोदी जी के विकास का मॉडल, बिहार के 14 करोड़ लोगों की आस्था और आशीर्वाद हमें प्राप्त है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लगातार भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जंगल राज की पार्टी, अपराध की पार्टी, भ्रष्टाचार की पार्टी को बिहार की जनता ने बाहर का दरवाजा दिखाया है। और इस बार भी बिहार का मन मस्तिष्क स्पष्ट है, बिहार की जनता का मन स्पष्ट है। बिहार के लोगों ने अपना मन बना लिया है। एनडीए की सरकार और नीतीश जी का मुख्यमंत्री। संजय राणा जी, 2 स्टेटमेंट आ जाए। तेजस्वी यादव ने कहा ये तो खटारा गाड़ी है जो पटरी से उतर चुकी है, खराब हो चुकी है। 20 साल तक इस गाड़ी को बहुत चला लिया जनता ने, अब नहीं चलने वाली है। तो 20 साल एक लंबा समय होता है ना। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, फिर नीतीश कुमार के बारे में उनकी एज की बात की जा रही है। ऑपोजिशन एक नैरेटिव बना रहा है लगातार। देखिए रीमा जी, गुड इवनिंग में फैलो पर। देखिए, ऐसा विपक्ष तो नैरेटिव बना रहेगा, और विपक्ष तो चाहता है कि बिहार हमेशा लालटेन युग में रहे, हमेशा अंधेरे में छाया रहे, हमेशा में अंधेरे में खोया रहे। देखिए, जहां तक बात हो रही थी विकास की, तो ये आरजेडी वालों को 90 से लेकर 2006 तक का देख लेना चाहिए। दशमलव में घिसक के जीडीपी चल रही थी, घसक के। और 2005 में 8,000 रुपया प्रति व्यक्ति आए थी, आज बढ़ करके 79,000 हो गया है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा विकास किसके राज में हुआ है। देखिए, परसेप्शन कुछ भी बना है, सबको पता है किसके राज में क्या हुआ है। तीसरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिहार के समय किसके राज में बनी? एनडीए और नीतीश बाबू के राज में बनी है, बीजेपी शासित राज्य में बनी है। लेकिन किसके, उनके राज्य में बनी? कभी नहीं। वहां से पलायन। हमारे एक मित्र ने अरे सुन लो भैया, काहे व्याकुल होते हो? अरे गुजरात, अरे काहे व्याकुल होते हो? जवाब जी, आज आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्या समस्या भी हथौड़े पे आएंगे, भी समस्या है। ये बोले आप ही के दोस्त है संजय राणा भी, बीच में नहीं बोलना चाहिए। हथौड़ा और छेनी लेकर के, हथौड़ा और छेनी से बिल्डिंग का निर्माण होता है और देश का निर्माण होता है। लालटेन से अंधेरा दूर नहीं होता। प्रकाश लाने के लिए कहीं ना कहीं आपके हेलोजन लाइट और बल्ब जलाना पड़ेगा। और उस युग से कहीं ना कहीं बिहार बाहर आ चुका है और उस युग में नहीं जाना चाहता है। पलायन की बात कर रहे हैं लोग, पलायन तो छोड़ दीजिए, वो छोटी बात है। अपना नाम सरनेम लिखना भूल गए थे। बिहार का वो हाल कर दिया था कि सिर्फ आपका, किसने किया था हाल? अरे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने किया था। ठीक है। आपको पता है वहां पे लोग सरनेम नहीं लिख सकते थे। शादी होती थी तो शोरूम से कारें उठा के ले जाते थे। बहन बेटियों के साथ क्या होता था बताने की जरूरत। जयंत जी, ग्यासु जी, यही वो बात है जिस युग की बात हो रही है ना बीजेपी एनडीए के कैंपेन में, कि उस युग में कोई बिहारी वापस नहीं जाना चाहता। बिहार के लोग त्रस्त थे उस वक्त, उसकी याद दिलाई जा रही है उस युग की। जिज्ञासु जी, हमारे कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो लोग जानते हैं और देश दुनिया में उसको लेकर कभी भी हम लोग मैं बता रहा हूं ना। हाँ। मैं बता रहा हूं ना।
कि हमारे कार्यकाल में 7 विश्वविद्यालय खुले, फिर केंद्र में जब हमको काम करने का मौका मिला तो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को दिए हमने, मोतिहारी में, गया में और अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय, और एक एएमयू का परिसर किशनगंज में। जरा बताएं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बताइए, था खराब या नहीं था? जंगल राज का नाम क्यों दिया गया था? उसी पर तो बीजेपी पूरा कैंपेन चला रही है। कमाल की बात है, अपहरण के मामले लगातार बढ़े हैं बिहार में। ये क्या मेरा डेटा है कि 2018 में बिहार में 9,935 अपहरण के मामले दर्ज हुए एक वर्ष में। 2007 में अगस्त में 4,849 मामले एक साल में, और बिहार में 3 साल में 2001 से 2004 तक मात्र 1,527 मामले थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 21,711 2018 में, बिहार को तीसरे नंबर पर अपहरण के मामले में इन लोगों ने पहुंचाया। ये लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में क्या हुआ, ये लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे। 10 सेकंड संजय राणा, फिर उसके बाद लोग हैं गलत सुशासन होगा, वहां पे केस रजिस्टर्ड होंगे, केस होंगे। जहां पे जंगल राज होगा वहां पे बन जाएंगे। नंबर 1, और इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और खुद का नेता पास नहीं हो पाया, कक्षा 10 नहीं पास हो पाया और यूनिवर्सिटी 3 बना दी। अरे घर के लोगों को तो पास करा देते हैं। अगर घर के लोगों को पास नहीं करा पा रहे, डॉक्टर बनी है, एमबीबीएस की, मीसा भारती एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मीसा भारती एमबीबीएस की डॉक्टर है, उसकी बात करेंगे ना। 3 यूनिवर्सिटी हम खुद नहीं पास हो पा रहे, 3 यूनिवर्सिटी बना दिए। और मीसा भारती जी का एडमिशन रीमा जी कैसे होता है सबको पता है। किस तरह से टाटा को प्रेशराइज करके कराएंगे तो भी मुझे पता है, फिर उसका ट्रांसफर पट्टा कॉलोनी में कराएंगे तो भी मुझे पता है। ये किस मुंह से बोलेंगे? अरे भैया, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें होती थी। ये था आपका शासन और कुशासन। कुशासन आपने ऐसा बना दिया था कि बिहार से पढ़े लिखे कोई भी योग्य व्यक्ति बाहर भाग गया था। वो पलायन आज तक रुका नहीं है, लोग वापस नहीं आना चाहते हैं। और 10 साल लगा था नीतीश बाबू को परसेप्शन चेंज करने में। बिहार में शासन है, शासन नहीं। 10 साल फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। जिज्ञासु जी, ये तो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। पासवान जी 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मैं सही जवाब। फैक्ट्स पर ही तो उन्होंने काउंटर किया ना आपको, फैक्ट्स पर उन्होंने काउंटर किया आपको फैक्ट्स पर। अच्छा, मैंने फैक्ट्स आपको बताए ना। ठीक है पासवान जी के समय उनका, अच्छा मैं गिना रही हूं, रुकिए ना। अनुसंधान केंद्र था, उसका पूर्णकालिक निदेशक आज तक क्यों नहीं है दरभंगा में? मैं जानना चाहता हूँ। 42 गुरु प्रकाश पासवान जी, अच्छा ठीक है, उनका कहना है, 1 सेकंड भाई, बीच में नहीं। गुरु प्रकाश जी उनका कहना है अपहरण के मामले आपकी सरकार में ज्यादा बढ़े हैं, इतने सारे विश्वविद्यालय उन्होंने बढ़ाए, यानी कि शिक्षा व्यवस्था उनके राज में काफी दुरुस्त थी, चाक चौबंद थी, लेकिन आप लोगों के आते ही कुछ नहीं हुआ। ये फैक्ट्स क्या है? रीमा जी, अभी चलिए आप मेरी बात मत मानिए, आप राणा जी की बात मत मानिए, आप बीजेपी जेडीयू की बात मत मानिए, आप एनसीआरपी की बात मत मानिए, आप आदरणीय राबड़ी देवी जी की भाई की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगी? सुभाष यादव जी का बयान आया है। रीमा जी, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं क्या? अच्छा, उनकी बात तो सुनिए। सुभाष यादव जी का बयान आया है कि अपहरण का गोरख धंधा सीएम हाउस से चलता था। आप मत मानिए मेरी बातों को, आप मत मानिए राणा जी की बातों को। एक हफ्ते पहले 62 घोटाले हुए हैं नीतीश कुमार के समय में। नरेंद्र मोदी की बात मानना चाह रहा हूं ना, सृजन घोटाले। अरे इतने विचलित मत होइए ना जिज्ञासु जी। अब आपकी बारी में आपने बोला, अब आपका जवाब वो दे रहे हैं, अब उनकी बात तो सुनिए। इतने विचलित मत होइए, रुकिए, अभी जवाब सुनिए। हाँ, अच्छा रुकिए, जवाब सुनिए। अगर गुरु भाई सुभाष यादव को इतना गंभीरता से लेते हैं, सुभाष यादव और साधु यादव एक समय में उनकी तूती बोलती थी, ये तो सच है ना, इसमें क्या बुराई नहीं है, तो सच है ना, सबको पता है उनका था। अब रुकिए नरेंद्र मोदी, अच्छा रुकिए, हाँ रुकिए। गुरु प्रकाश पासवान, इनका विचलित होना बहुत कुछ बोल रहा है, इनका जयंत भाई का विचलित होना बहुत कुछ बोल रहा है, ये विचलित हो गए हैं। अरे प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार घोटालेबाज है, दरवाजे तक को बेच दिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है। 9 नंबर नरगल थोड़े हम सुनेंगे। 9 नंबर। अच्छा ठीक है, 9 नंबर। रीमा जी बोल सकता हूँ क्या? 9 नंबर। मेरे ख्याल से रुकिए, अब रुकिए पासवान जी, आप भी रुकिए। सही है जवाब, लाडला कौन है? एक लाइन में जवाब चाहिए मुझे, बस खत्म करते करते। लाडला कौन है आपका? तेजस्वी यादव लाडला है, राहुल गांधी लाडला है, अभी तक लाडला कौन है तय नहीं हो पाया है। सुभाष यादव लाडले हैं।
सुनिए रीमा जी, जवाब सुनिएगा। हाँ बोलिए बोलिए, जवाब सुनिएगा। ये बात सुभाष यादव इनके बहुत फेवरेट हैं। सुभाष यादव इनके लाडले हैं, इस बात को स्वीकार करिए। ये बात सुनकर के अच्छा सुभाष यादव नहीं के लाडले रीमा जी। गुरु भाई लाडलों से याद आया, अपहरण का गोरख धंधा नहीं हो पा रहा है। लाडला कौन है? लाडला एक नाम नहीं बता पा रहे हो आप, सैयद जवाद। लाडला कौन है? आप फुटेज लिए जा रहे हो इतनी देर से। अरे हम भेद नहीं करते, हमारे लिए सब लाडले हैं। बिहार की जनता का हर एक नागरिक लाडला है हमारे लिए, नागरिक स्पेशल नहीं है। अब आप बिहार के तो नेता कोई नहीं है आपके पास, मतलब आप नागरिक को लेकर उनके चेहरे पर। हमारे लिए पूरा बिहार लाडला है, पूरा देश लाडला है। अब देखिए इसी बात पर योगी जी नाराज होते हैं। अच्छा सुनिए 10 सेकंड रीमा जी, और 10 सेकंड। देखिए लाडले तो हो गए नीतीश जी, अब उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन भी। अरे कहां से कहां पहुंच गए? मैं क्या पूछ रही हूँ, आप कहां पहुंच रहे हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और वक्त की बाधा थी, वरना अब तो बिहार पर चर्चा क्योंकि शुरू हो ही चुकी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार का मामला ही अब आगे बढ़ेगा और लगातार रोज ऐसी गर्मा गर्म चर्चा आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।